Dorma, currently working as a president of Central Tibetan Women Association, and my colleague Kelsan Ramala, General Secretary of Central Tibetan Women Association. Tipti Malay संगठन जो है ना उस अध्यक्ष हूँ। अभी जो तिप्ती मालय संगठन कब फाउंडेड हुआ बोलने से 1959 मार्च 12 में जब चाइना ने रिप्रेशन किया था, कैप्चर किया था, उस वक्त सब तिप्ती मालय मिलकर ये संगठन किया है। उसके बाद हम लोग जो एग्जाइल में आया, उसके बाद ब्लेसिंग ऑफ हिज होमिनेस द दलाई लामा 1985 सितंबर 10 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद अभी जो यहाँ आने का कारण, जो मकसद जो है वो 5 पॉइंट लेकर हम लोग इंडियन लीडर्स को अपील के लिए आया था। पहले तो हम सिक्किम गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहते हैं, और स्पेशली टू द इंडियन गवर्नमेंट अभी तक जो मदद किया, जो वातावरण अपना 22 सामान बनाया, इसके लिए वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल। हमारा जो पहले जो पॉइंट है वो ये है, अभी चाइना ने हम लोग कैप्चर करके अभी 62 साल हुआ है। इसके बीच में अभी हम लोग मिडिल वे अप्रोच के द्वारा हिज होलिनेस दलाई लामा और चाइना डेलीगेट्स के साथ अभी मिल बात करना चाहते हैं। वो बात शुरू हो, इसलिए इंडियन लीडर्स उस विषय में साथ दे, हम लोग उसके बारे में हम लोग को सपोर्ट करें। अभी तक जो सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद, फिर भी आगे जाने के लिए इसके लिए सपोर्ट करें। और सेकंड ये है कि चाइना ने अभी तक कैप्चर सिर्फ तिब्बत ही नहीं है, उइगुर, थाईवान सबको ऐसे कैप्चर किया हुआ है। इसलिए ये सब बंद हो, सबको ह्यूमन राइट्स हो, मानव अधिकार सबको है, इसके वजह से वही सबको मिले। उसके बारे में आप लोग इंडिया जो है ना, वो हम लोग सब एग्जाम्पल लेने के, जो कंट्री है, जितना देश है, वो सब एग्जाम्पल लेने के लिए इंडिया ही है। जब सब मिलजुल कर बैठते हैं और सब में एक ही तरफ की डेमोक्रेटिक जो है वोट लगाना, कुछ बना, सब मानव अधिकारी सब है, वैसे भी हो हम लोग की तिब्बत की जो जनता है। और तीसरी ये है कि अभी हाल ही में 2019 से कोविड-19 हुआ, सब देशों में कितना तकलीफ हुआ वो सब जानते हैं। वो सब मध्य रख के फिर क्या बोलो, अभी जो मानव अधिकारी ने वो सब देख चुके हैं। पहले तो हम लोग जितना अपील करें उसके बारे में थोड़ा मुश्किल भी है। पॉलिटिकल लीडर लोग अपना देश के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, लेकिन अभी तो सब क्लियरली आ चुका है। चाइना ने जो जितना कर रहा है, कितना कर रहा है, अभी हम लोग जितना ऑल वर्ल्ड सब कोविड से बहुत है बिजी में रह रहा है। अभी चाइना ने कितना डैम बनाया, इन्वायरमेंट के डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है। तिब्बत का जो वो तो तिब्बत का मानव क्या बोलो वातावरण जो है ना, वो डिस्ट्रक्शन करने से बाद में जितना डैम बना, बाद में एशिया सबको पानी का दिक्कत कैसे भी हो जाएगा। इसलिए तिब्बत की आज़ादी सिर्फ तिब्बत की आज़ादी ही नहीं है, एशिया लोग का पानी के बारे में सोचे, इसके वातावरण, जल आयु भी इसके बारे में सोचे इंडिया के, इसके लिए सब मदद करें। और एक बार ये है, और फोर्थ वन ये है कि हमारा पेंशन लामा, अभी दलाई लामा के बाद में हमारा सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट है लामा, ये वो पेंशन लामा, लेमन पेंशन लामा की अभी 6 साल से मिसिंग है। एक माँ होकर अभी तिब्बती महिला संगठन जो है ना, वो एक माँ है, अभी हमारा बेटा कहाँ है, वेयर इज सी मिसिंग सिंस लास्ट 26 ईयर्स। इसके बारे में आप लोग भी मदद करें, सहयोग करें। और लास्ट एंड फाइनल, जो चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें मानव अधिकारी का हनन हो रहा है, इसके बारे में अभी सब लोग पता चल चुका है। इसलिए अभी आने वाला विंटर ओलंपिक 22 में इसके बारे में हम सब मिलजुल कर
नारे लगाएं, इसके लिए हम लोग को भी सपोर्ट करें, आप लोग भी इसके बारे में सोचें। यही 5 विषय लेकर आए हैं। Continuously violate the human rights in Tibet. We, the Tibetan, we reached in India almost 60 years. So till now, our Tibet issue and our environment and all these things is very sensitive, and every and each country we have to look at the Tibet situation. Not only the Tibet, Tibet is the third pole of the world. So nowadays so many dams are building in Tibet. So automatically Asia's the main water resources is Tibet, from Tibet. So if Tibet China builds so many dams, so it automatically affect to the other world. So all the countries should have to stand together, and we have to make a very we should voice up our rights. So I think so we later we are not get this kind of problem. So this during 21st century is very, very important economically and all these things. Mostly the basic is the environment. If the environment is not good, so it's very, very difficult to those who are living in this earth. So China should stop the violation human rights in Tibet. So nowadays Tibet Yarchenkar is the one of the most largest Buddhist institute in Tibet. So since 2019 July, they are destroying the all demolition and all these things. So nowadays, according to the news and all these things, so till now 3,500 nuns are they evacuate from this place. So later on, where they have to go, where they have to live, we don't have any some idea and all these things. Later on, we didn't get these things or proper place to these things. We have to the religion, all these things we have to practice as a Buddhist. We have to practice all these things. So it's very difficult, and these things China continuously violate our human rights and all. Not only the Tibet, they also Uyghur, East Turkestan, Taiwan and Hong Kong, all these things minority countries. So China should accountable for all these things. Has any country diplomatically said that they will boycott Beijing 2022? Yes. Has any country diplomatically said? Actually, according to the news, so America Joe Biden he also reject the invitation of the Beijing 22 Olympic. He also mentioned that they are not sending the spokesperson to that Beijing. Yeah, that means it makes sense, Yeah. Now we across Darjeeling and Kalimpong, and we reach Gangtok. Yeah, still we have to go another place. Which is the next place you'll visit now? Yeah, now After that, Salugara, then Shillong, then So all over India. You're also Yeah. going to Shillong yeah, Yeah, yes, sure. yes. and Arunachal next visit. yeah, next Arun, visit. yes. Not As my point of view, I came from Tibet when I was 7 years old. So till now I reached in India almost 23 years old. I didn't meet my parent till now. So their situation is very worsening day by day. Even for personally, I'm not calling to my parents all these things. That means there is no even voice up in these things rights. All our surveillance and digitalize all these things. It's very difficult for us. So they have to compulsory go for. If they are not going for these things, Xi Jinping he already visited in Congo and Lhasa. First he visited Congo. So each and every family, 3 to 4% have to go there. If they are not going for the
welcome he. Then afterwards there will come some issue and all these things. Yeah, for Tibet condition is worsening day by day. It's very difficult for those who are living in Tibet. Recently 3-4 person came from Tibet. We also welcome our TW office and we talked and we listening the what about inside the Tibet. So it's while listening, it's very something. What should I say? We feel very restless and so speechless. So that means if they came to India, so what about those who are living in Tibet? Yeah, so it's very very worsening situation in Tibet. Even we don't have practice our Buddhism and all these things. So it's they also violate the basic human rights. We are not demanding so much. They also violating the basic human rights. Yeah. Don't you think that this campaign will hamper the relation between India and China? Can you repeat the question? I think so, because after COVID-19, all the world leaders knows everything clearly. Transparency is there now. Before, if we appeal to the leaders, means they have to think their own country politically. They have to think. After that, COVID-19 is clear. We have to voice up. If not, means it will be too late. 100%, because Yes, India is our hopefully. second motherland, no?